Assalamu alaikum. Welcome to grade 9th biology class. Today we are going to discuss the topic interdisciplinary sciences, in which the word inter mean between and disciplinary mean branches. So the relationship of different branches of sciences among or between each other is given the name interdisciplinary sciences. The meaning of this topic is inter means between, disciplinary mean branches. So according to meaning of interdisciplinary, we are actually talking about the relationship of different branches among each other. As we know that all branches of sciences are somewhat interconnected with each other. So one branch of science is basically dependent on other branch, and there are lots of branches of sciences as well, and we know about them, that is chemistry, mathematics, geometry, economics, physics. So if we relate the biology to these branches, then this topic will become, and the meaning of this topic is related to interdisciplinary sciences will be cleared. Interconnection of these all branches among branches of science cannot or could not be denied in the past few years as well. Now biology includes, very well about that informations and knowledge on various aspects of living things, but these information relate to the other branches of science as well, that we cannot explain any living thing without chemistry, without physics. So what will be the definition of interdisciplinary sciences? First we will write the definition or explain you this definition, that what is meant by interdisciplinary sciences. So each branch of science, first I am writing here so it can be clear to you, each branch of science has relationship to other branches of science. Other branches of science, which forms or that forms the basis, बुनियाद जिसे आप कहते हैं, basis, that forms the basis of interdisciplinary sciences. We have to note down this definition from this paragraph. What is the meaning of this paragraph? Now in Urdu, हर एक ब्रांच जो साइंस से रिलेटेड है, यानी साइंस की हर ब्रांच का ताल्लुक किसी दूसरी साइंस की ब्रांच से लाजमी तौर पे रखा गया है, यानी ये कनेक्शन लाजमी आपके दो ब्रांचेस के दरमियान होगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि एक बुनियाद बनती है जिसे हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं, क्योंकि हम इस फैक्ट को, इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि एक साइंस दूसरी साइंस की मोहताज होती है, वो डिपेंडेंट होती है। इंसान भी इसी तरह, जब एक इंसान को किसी की मदद की ज़रूरत होती है तो वो दूसरे इंसान से मदद तलब करता है। यहाँ पर भी साइंस को हमने एक ऐसा ही इंसान करार दिया है कि कोई दुनिया में जब इंसान नहीं है जो किसी दूसरे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, तो साइंस भी किसी दूसरे साइंस के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। इसका सर्वाइवल, इसकी मौजूदगी, इसकी एग्जिस्टेंस उसी वक्त मुमकिन है जब एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को सहारा दे। Now, interdisciplinary sciences are being connected with each other in this manner, that first of all we have to describe the biophysics. What is this relation about? It is the relation between the biology and physics. And in the similar manner, the next interdisciplinary link is biochemistry. What is biochemistry? In which the biology is linked to the chemistry. Then comes third one, and it is called biomathematics. What is biomathematics?
It is also given the name biometry. So biomathematics is actually related to the relationship of biology to mathematics or geometry. Fourth interdisciplinary science is biogeography. Biogeography. And biogeography is actually related to geography and bio. Geography, word geography comes from the earth, the surface of the earth where different animal and plant exist. They are found there. So next and the last link is called bioeconomics. Bioeconomics. So these 5 interlink or linkage are being seen in biology with other sciences. If we talk about the first linkage of interdisciplinary sciences, that is biophysics, then first we have to define it. What is biophysics and how does it apply on biology? So it deals with the study of the principles of physics which are applicable to the biological phenomena. So basically biophysics is the principles of physics, rules of physics, different mechanism of physics which are applied on, applicable on, which are used on or in different biological phenomena or biological process, you can also say biological processes or phenomena. Now what are these biological processes and what are the principles of physics which can be applied? So this can be best understood by this example. Now there is a similarity between the working principle of lever. Now what is lever? It is a simple machine used in the physics. And what is lever? Lever is that machine. In the next video I'll show you with the help of some figures as well. So what is lever? It is basically consisting of a simple metallic rod in the center, and it is supported by a part of fulcrum, a part that is called the fulcrum. On one side of lever there is a load, and on the other side there is also a part of lever that is called effort. So with these 3 parts, that is E, F and L, this whole simple machine will be given the name lever. So we will apply the working principle of lever on limbs. So when studying the process of movement in animals, the biologists have to refer the laws of motion in physics. इस पूरे अमल को समझने के लिए ये मिसाल तस्वीर के ज़रिए, फिगर के ज़रिए आपके सामने है। होता ये है कि आपका एक ह्यूमन आर्म इस वक्त नज़र आ रहा है जिसमें फिंगर्स, एल्बो और मसल्स मौजूद हैं। यानी ये आपका फिंगर का एरिया है, ये बीच में आपकी कोहनी जिसे एल्बो कहते हैं, और बैक साइड पे आपके बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स होते हैं। जब हम पूरे इस लिम्ब को रिलेट करते हैं अपनी एक फ़िज़िक्स में एक सिंपल मशीन यानी लीवर से, तो हमें पता चलता है कि इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, जिस तरीके से हमने फिंगर्स, एल्बो और मसल्स के बारे में आपको बताया। लीवर की सिंपल मशीन जो है वो क्या होती है कि इसमें सेंटर में जो है वो एक सपोर्ट होता है जिसको F से ज़ाहिर किया गया है यहाँ पर, और ये फुलक्रम है। एक साइड पे लोड यानी L लोड वज़न रखा गया है, जबकि E फॉर एफर्ट से कोई भी शख्स जो है वो कोशिश करता है, अपनी ताकत लगाता है जिससे वो लोड को उठा सके। इसकी बहुत ही आसान मिसाल मैं आपको दूंगी सीसा से। यकीनन बच्चों के इस झूले से आप वाकिफ़ होंगे। उसमें ये होता है कि बीच में सपोर्ट होती है। एक तरफ अगर आप थोड़े से फ़ैट बच्चे को बिठा दें, दूसरी तरफ थिन बच्चे को बिठा दें, तो जो फ़ैट बच्चा होगा वो लोड होगा और जो थिन वाला बच्चा होगा वो एफर्ट होगा। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि ज़ाहिर बात है लोड जो है अगर ज़्यादा हुआ तो ये जो बार आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, इसमें लोड का एरिया नीचे चला जाएगा और एफर्ट ऊपर
चली जाएगी, जो कि इंडिकेट कर रही है कि एफर्ट कम है और लोड ज़्यादा है। बिल्कुल इसी फिनोमेना को, इसी लीवर की इस मशीन को हम अपने लिम्ब ऑफ अ मैन यानी इंसानी बाजू या टांग पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि जो एल्बो है ये हमारा फलक्रम है, मसल्स जो है हमारे क्या हैं, ये हमारी एफर्ट होंगी, और अगर हमने अपने हाथों या फिंगर्स की मदद से कोई हैवी लोड उठाया हुआ है तो वो हमारा लोड होगा। जिस तरह से इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि ये जगह जो आपके बिल्कुल शोल्डर के करीब है, या शोल्डर का एरिया जो कि आपके पूरे लिम्ब को अटैच किए हुए है, ये आपके क्या होगा, फलक्रम। इसके बाद एरो जो इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर आपके मसल्स हैं, तो मसल्स क्या कर रहे हैं, मसल्स आपके एफर्ट पुट कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप आगे की तरफ फिंगर्स की तरफ आ रहे हैं, अपने हैंड की तरफ, तो आप क्या देख रहे हैं कि आपके हाथ में एक थोड़ी सी एक बार, एक लोहे की सलाख कह लें या हैवी लोड आप कह सकते हैं इसको, कि आपने उठाया हुआ है, जिसको मैंने एक स्केयर से जाहिर किया है, एंड दिस इंडिकेट्स लोड। सो ये आपका पूरा जो ह्यूमन का लिम्ब है वो एक फिज़िक्स के की मशीन, जिसे लीवर कहा जाता है, उससे रिलेट हो रहा है। और यहाँ पर एक और एग्जांपल आपकी फुट की भी है, जिस पर आपने उसी तरीके से एफर्ट, लोड और फलक्रम अप्लाई करना है। तो ये आपके सामने एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की एग्जांपल मैंने क्लियर कर दी है। Now the second linkage is called biochemistry. Second linkage or interdisciplinary sciences is called biochemistry. Now exactly what is biochemistry first? We are going to define now. It deals with the study of the chemistry of compounds and processes. Compounds and different chemical processes which are represented in the form of chemical equations. So chemistry of different compounds and chemical processes, not only this, but they are also occurring in, where they are found, they are occurring in animals or living organisms, animals, plants, as well as humans. So this is the definition of biochemistry. Now it can be cleared from this example. The example which is represented here is related to the basic metabolism of two important phenomena. One is called photosynthesis, while the other one is called respiration. Now what is photosynthesis? It is the food making process in plants, and respiration is the process through which plant, animals or humans get oxygen in their body and release carbon dioxide after the breakdown of food material present in their body. So these two phenomena, which are actually the part of biological processes, is actually happening due to the chemistry. They are actually related to the chemistry. How? For example, take the example of this photosynthesis in the form of chemical equation. What is photosynthesis? Is a food making process. How will you prove it? Because carbon dioxide in this process reacts with water to produce the food of a plant, that is called C6H12O6. Glucose along with O2 is also formed. So how do I represent it? Can you see that this whole phenomena of the photosynthesis is represented here in the form of symbols, in the form of formula of different compounds. So if biology is linked to the chemistry, then we have to mention it with their chemical compounds and the chemical processes as well. So these two things are important here, that describing a phenomena of biology with the help of compounds, formula of the compounds and the chemical processes, that is the chemical in the form of chemical equation, then it will be given the name biochemistry.
Third linkage is biomathematics. Now in mathematics, we are also familiar that the geometry is also involved. So we are writing here the biometry as well, because there are basically three basic parts which you study in the maths. So first part is the simple maths, then algebra, and then last one is the geometry. So we are merging here the two part of the mathematics, that is biomathematics and now biometry as well. So what is biomathematics? First of all, it is dealing with the study of biological processes, those processes which we have discussed earlier, biological processes using mathematical techniques and tools. So these are the mathematical techniques and tools. And these tools are used in biometry, that is geometry. I think you are familiar with different sort of instruments which are present in your geometry box. First one is, I think you can easily identify protractor. In the similar manner, compass. You have drawn circles by this compass. Then ruler, having inches or centimeters are mentioned on it. So different sort of tools, and along with different methods of which subject, which sciences, mathematics is actually related to the biological process, and this whole phenomena, this whole sequence is called biomathematics or biometry. So without mathematics, biological processes cannot be explained too. Even there are different graph papers, graph method, as well as you can also draw some tables to show your data of the biological processes. It can only be occurred through mathematics, because without it you cannot able to solve your biological problems. So we are actually dependent on biomathematics in this manner, that without mathematics biology cannot be solved. The matters or the problems of the biology cannot be solved. Now the fourth linkage or interdisciplinary sciences is called biogeography, in which most of you have some problems. You are not understanding it clearly that what is biogeography. So what is biogeography? Basically, it deals with the study of the occurrence and distribution of living organism. Again, it is related to the distribution of living organism, that is organism, and where they are actually found, where these organisms are found. So occurrence and distribution mean they are found everywhere in the world in different geographical regions. These regions can be desert, ocean, forest, and lot of other places. Even some of the birds fly in the air as well. So these are different locations of your world where different organisms are distributed for their habitat. Not only for their habitat, but also they are getting shelter, as well as they are getting food. They are getting food and other basic requirements which they need. So what is the meaning of biogeography here? Biogeography is basically the occurrence and distribution of organism in different parts of the world, different geographical regions of the world. It basically gives you the knowledge about that particular region. Not only that particular region, but also it determines the characteristics of living organism found there. For example, if I'll talk about the camel, where does the camel live?
Where does camel's body adopted for? Camel body is basically adopted for desert due to some special adaptation it has. Clear? In the similar manner, fish can only survive in water. What is the reason behind why fish survives only in water? Because fish has some special kind of adaptation in them. Fish have somewhat fins to swim, caudal fins, pectoral fin. So they have fin. They have a streamlined body. So these all adaptation help fish to survive in water. Now come to the word geography once again, so it can be clear to all of you. Geography is the word comes from geo, and geo mean earth, ज़मीन जिसे आप कहते हैं. तो अर्थ पर यानी ज़मीन पर मुख्तलिफ जानदार मुख्तलिफ औकात में और मुख्तलिफ मौसमों के तहत जब अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और अल्लाह ताला ने उनको इस तरह से बनाया होता है कि अगर उनको किसी दूसरे रीजन यानी उनके असल मकाम से दूसरी जगहों पर भेज दिया जाए तो वो सरवाइव नहीं कर पाते, ज़िंदा नहीं रह पाते. जैसे कि मैंने अभी आपको मिसाल दी कैमल की. इसी तरह से पोलर बेयर जैसे कुतबी जिन्हें बर्फ़ानी रीछ कहा जाता है. बर्फ़ानी रीछ कहाँ पर रहते हैं? बर्फ़ानी रीछ बर्फ़ानी इलाकों में रहते हैं जिन्हें पोलर रीजन्स कहा जाता है. क्या नाम है इन रीजन्स का? पोलर रीजन्स. तो अगर हम बात कर रहे हैं बर्फ़ानी रीछ की कि अगर उस बर्फ़ानी रीछ को आप डेजर्ट में ले आएँ तो क्या होगा, या वाटर में छोड़ देंगे भाई वो तैरे उसमें, it cannot be possible. So every living organism has some particular characteristics, properties through which they can survive into their environment. So this whole distribution and occurrence of living organism along with the characteristics of their geographical region is basically called biogeography. The last topic or the linkage of today's lesson related to the interdisciplinary sciences is number 5, that is bioeconomics. Bioeconomics. So what is bioeconomics first? Definition, note it down. It deals with the study of organisms. Once again, organisms. Dealing with the study of organisms from economical point of view. Economical point of view. What is the meaning of this? जब आप किसी भी living organism को मौशी एतबार से व्यू करते हैं या उसे मौशी नुक्ता नज़र से देखते हैं, मौशी तौर पर देखते हैं, तो ये आपका एक लिंक बनता है related to biology, that is called bioeconomics. Whenever you use the word bio, it means living organism. So interconnection or the interlinkage of bio with economics, in which you study the organisms from economical point of view, is called bioeconomics. Now this whole thing, this definition can be cleared with this example. Example here I am quoting is wheat plant. Wheat plant, गंदम के पौधे को कहा जाता है wheat plant. So actually the cost value and the profit value of the yield of wheat can be calculated through bioeconomics. मिसाल के तौर पे अगर एक फार्मर अपने खेतों में, अपने जो फार्म है उसमें wheat plant ग्रो करता है, wheat की क्रॉप ग्रो करता है, so actually what does he desire for? वो क्यों कर रहा है ऐसे? सिर्फ अपने खाने के लिए कि उसको गंदम मिल जाए, उससे गंदम का आटा बन जाए? नो, नॉट ड्यू टू दिस रीज़न. एक्चुअली वो सबके लिए काम कर रहा होता है. वो अपनी इकोनॉमी को इस्टेब्लिश नहीं कर रहा होता है, उसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो फार्मर क्या करता है? वो फार्मर मुआशी तौर पर ना सिर्फ ये कि ख़ुद को बल्कि पूरे मुल्क के लोगों को फैसिलिटेट कर रहा होता है.
उनको फ़ायदा पहुंचा रहा होता है। लेकिन फार्मर का एक अहम जो मकसद ये भी होता है कि ज़ाहिर बात है उसे भी अपने घर वालों का पेट भरना है। सो उसके लिए वो बेनिफिट और लॉसेस की तरफ लाजमी देखता है। वो देखता है कि कहाँ पर उसको फ़ायदा हो रहा है और कहाँ पर उसको लॉस हो रहा है। तो बेनिफिट्स और लॉसेस की तरफ वो ध्यान रखता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या मौशी तौर पे उसको क्या इकदाम, क्या स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे उसका जो वो क्रॉप की ग्रोथ है वो अच्छी हो जाए, वो कौन से सीड्स इस्तेमाल करे और वो कौन सी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें जिससे कम खर्च में उसको एक बहुत बड़ी यील्ड हासिल हो जाए। यील्ड मीन प्रोडक्शन। What is the meaning of yield? Production. So, through bioeconomics, it can be possible. Why we are applying here the word bio? Because wheat plant is basically a living organism. So, even we can talk about the cost value and the profit value. So, what is cost value? Cost mean कॉस्ट वैल्यू आप किसको कह रहे हैं? कीमत खरीदने की कीमत, जो जिसमें आप किसी चीज़ को ख़रीदते हैं। एंड व्हाट इज़ द इन अदर टर्म प्रॉफिट वैल्यू। आपने किसी चीज़ को ख़रीदा तो उससे क्या प्रॉफिट मिला, क्या फ़ायदा पहुंचा, कितना फ़ायदा पहुंचा। तो इस नफ़ा नुकसान की जब आप बात करते हैं तो एक्चुअली आप क्या डिस्कस करने चाह रहे होते हैं? बायो इकोनॉमिक्स। So this is the end of today's lecture. I hope you have understood it very clearly and you have no objection now because I have repeated this lecture for you. Thank you very much for listening. Allah Hafiz.